everyone, welcome to my channel. So our today's topic is sickle cell anemia. Let's start with it. So what is sickle cell anemia? Sickle cell anemia is a serious disease in which the body makes sickle shaped red blood cells. इसमें क्या होगा, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो नॉर्मल शेप से डिविएट होके एक सिकल शेप बन जाएगी, दैट इज सी शेप. देन क्या होगा, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एंड आर डिश शेप. क्या होता है, हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, डिश शेप के होते हैं एंड लुक लाइक डोनट्स विदाउट होल्स इन द सेंटर. देन दे मूव इजीली थ्रू योर ब्लड वेसल्स. RBCs contain the protein carries oxygen from the lungs to the rest of the बॉडी. देन ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल आरबीसी कैसा होता है एंड सेकंड डायग्राम इज अबनॉर्मल सिकल शेप्ड आरबीसी, दैट इज सी शेप. व्हाट कॉजेस सिकल सेल एनीमिया? दैट इज सिकल सेल एनीमिया इज एन इनहेरिटेड डिजीज. ये इनहेरिटेड डिजीज है. दिस कम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. पीपल हु हैव द डिजीज इनहेरिट 2 कॉपीज ऑफ द सिकल सेल जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट. देन क्या होगा, द सिकल सेल जीन कॉजेस बॉडी टू मेक नॉर्मल हीमोग्लोबिन. वो जीन क्या करता है, हमारे बॉडी को एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाने के लिए फोर्स करता है. इसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन इज द iron rich protein that gives blood to the RBC and carries oxygen from the lungs to the rest of the body. Then sickle cell trait. If you inherit only 1 copy of the sickle cell gene, you will not have sickle cell anemia. Instead, you will have the sickle cell trait. तो क्या होता है, अगर सिर्फ एक ही पेरेंट को सिकल सेल जीन प्रेजेंट है और वो आप में आता है तो आपको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा. लेकिन अगर दोनों पेरेंट में वो एक रिसेसिव जीन है तो आपकी बॉडी में वो एक डोमिनेंट जीन बन के आ सकता है और आपको एक सिकल सेल एनीमिया हो सकता है. या फिर अगर वो सिर्फ एक कैरियर है तो उसको बोलेंगे हम सिकल सेल ट्रेट. देन पीपल हु हैव सिकल सेल ट्रेट यूजुअली हैव नो सिम्टम्स एंड लीड नॉर्मल लाइफ. हाउएवर दे कैन पास द सिकल सेल जीन टू द चिल्ड्रन. देन हु इज एट रिस्क फॉर सिकल सेल एनीमिया? दैट इज सिकल सेल एनीमिया इज मोस्ट कॉमन इन पीपल whose families come from Africa, South or Central America, Caribbean island, Mediterranean countries, India and Saudi Arabia. Then what are the signs and symptoms of sickle cell anemia? That is, the signs and symptoms of sickle cell anemia vary. क्या होता है, ये वेरी करता है. It is present at birth. Many infants don't show any signs until 4 months of age. And देखेंगे signs and symptoms क्या है, most common है fatigue. तो क्या होता है, फटीग, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और वीक. अदर साइन सिम्टम्स क्या है, तो फर्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन डिजीनेस होगा पेशेंट को, हेडेक, कोल्डनेस इन हैंड्स एंड फीट, पेल स्किन एंड चेस्ट पेन. सडन पेन थ्रू आउट द बॉडी इज कॉमन. थ्रू आउट द बॉडी पेन होगा सडनली. दिस पेन इज कॉल्ड एज द सिकल सेल क्राइसिस. इसको हम बोलेंगे सिकल सेल क्राइसिस क्योंकि सिकल सेल क्राइसिस ऑफन अफेक्ट द बोन्स, लंग्स, एब्डोमेन एंड जॉइंट. क्या होता है, द सिकल सेल क्राइसिस अकर्स व्हेन red blood cells from the form clumps in the bloodstream. तो ये कब होगा क्राइसिस? क्या होता है, ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं वो एक क्लम्प बना देते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में. तो क्या होगा, these clumps of cell block blood flow. तो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं ब्लड फ्लो को to the small blood vessels in the limbs and organs. This cause pain and organ damage. Then hand and foot syndrome क्या है, sickle cell can block the small blood vessels in the hand or feet. Hand और feet में ब्लॉक कर देंगे. Then this condition is called as hand foot syndrome. It can lead to pain, swelling, fever. One or both hands or feet may be affected at the same time. Then splenic crisis क्या है, the spleen is an organ in the abdomen. Then normally it filters out abnormal red blood cell and help fight infection. In some cases क्या होगा, the spleen में trap cells that should be in the bloodstream. क्या होता है, spleen में cells trap हो जाएंगे. This causes the spleen to grow large and lead to anemia. Then क्या होगा, acute chest syndrome होगा. Chest syndrome में क्या होगा, life threatening condition है that is linked to sickle cell anemia. It's similar to pneumonia. That condition is caused by an infection or sickle cell trapped in the lungs. It is called as priapism. It happens because sickle cell block the blood flow to the out of an erect penis. Over time, priapism can damage the penis and lead to impotence. Then multiple organ failure हो सकता है इसमें. ये rare है but it is serious. It happens if you have a sickle cell crisis that causes 2 out of 3 major organs, that is lungs, liver and kidney to fail. Then symptoms of this complication are a fever and changes in mental status such as sudden tiredness and loss of interest in your surroundings. So these were the complications. Then we'll see diagnosis क्या होंगे इसके. Early diagnosis of sickle cell anemia is very important. Children who have the disease need prompt and proper treatment. Then the test use blood from the same blood samples used for other routine newborn screening tests. It can show whether a newborn infant has sickle cell anemia or a sickle cell trait. Then इसका treatment कैसे होगा? Sickle cell anemia has no widely available cure. However, treatment can help relieve symptoms and treat complications. The goal of treating sickle cell anemia are to relieve pain, prevent infection, eye damage and strokes and control complications. क्या होगा, bone marrow transplant हम कर सकते हैं. offer a cure in a small number of sickle cell anemia cases. Researchers continue to look for new treatment for the disease. Then these include gene therapy and improved
bone marrow. तो bone marrow transplant में क्या होगा? Bone marrow transplant can work well for treating sickle cell anemia. This treatment may even offer a cure in a small number of cases. However, the procedure is risky and can lead to serious side effects or even death. Because of this, only some people can or should have this procedure. Then gene therapy में क्या होता है? Gene therapy is being studied as a possible treatment for sickle cell anemia. Researchers want to know whether a normal gene can be. They are also studying whether they can turn off the sickle cell gene or turn on a gene that makes RPCs behave normally. Then इसका treatment कैसे होगा? New medicines आए हैं इसके लिए जो है. फर्स्ट इज ब्यूटारिक एसिड. दिस इज अ फूड एडिटिव दैट मे इंक्रीज नॉर्मल hemoglobin in the blood. Then nitric oxide. This medicine may make sickle cell less sticky and keep blood vessel open. People who have sickle cell anemia have low level of nitric oxide in their blood. Then desitadine, that is, this medicine increase hemoglobin F level. It may be a good choice instead of hydroxyurea. Then इसको prevention कैसे करेंगे? You can prevent sickle cell anemia because it's an inherited disease. However, you can take steps to reduce its complication. People who are at high risk for sickle cell anemia and are planning to have children may want to consider genetic counseling. A counselor can help you understand your risk of having a child who has a disease and help the choices that are available for you. So this was all about sickle cell anemia. I hope you have understood about sickle cell anemia. So next time we will come up with a new topic. Till then, keep learning and keep watching my videos, and please subscribe to my YouTube channel. Thank you.